claim on other person why they are using the same thing. So first of all, this thing you have to patent or copyright and trademark. So in during this thing, we have to introduce the intellectual property right is something produced using human interact with the commercial value. So then the example of IPR, intellectual property are an invention related to product or process, a new design, an article, a literature or artist work, and a trademark. So here I have already told, first you have to what you want to develop your idea in the product format, in the design format, in the article format, in the literature format, what you want to develop in novel or innovative idea. So then intellectual property right held by the person over the creation. Hello, some voice is Yes, coming. So yes, some please. person is स्टूडेंट्स अपने other म्यूट way. कीजिए, म्यूट कीजिए म्यूट मैकेनिकल कर दीजिए आप डिपार्टमेंट। लोग. हेलो, यस सर, मैं ऑडिबल ना? यस सर, यस सर। Okay. So next thing is the intellectual property right or the statutory right once grant allowed the creator or owner of the intellectual property to exclude other from exploiting the same commercially for the same given period of time. So I have already told. सपोज कीजिए आपने कुछ नोवेल आइडिया को जनरेट किया, अगर आपने पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क नहीं प्रोसीड किए तो आपके आइडिया को कोई भी चोरी कर सकता है। तो उस चीज को बचने के लिए आप उसके बाद क्लेम भी नहीं कर सकते। सो दैट यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पेटेंट और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ऑफ योर innovative work or novel work. So what is the scope of this copyright and patent, all these things? The industrial property like a patent, industrial design, you have to go with your develop your product in the form of patent, or if you have some idea about the design, something like a you have to create a new design of any component like a IC engine, like a turbine blades, and all the other things whatever you use in the near about in your society. So idea will be also patent. Okay. Then trademark, trade script, plant variety, integrated circuit, geographical indicator. What is the geographical indicator? I will discuss later on in the slide. Then the copyright. Copyright. What is the copyright? You have in patent. In patent, you have to patent in the product or design. Okay. In copyright, you have to copyright of the literature, novel, poem, plays, film, music, artist, drawing, photographs. Uh, Programming art script like you have to develop some code in CFD or any NC or any commercial Python code you have to develop. You that means ki, that code is not done by anyone right now. Suppose ये मैंने कोड एक डेवलप किया तो ये अभी जितने भी वर्ल्ड या इंडिया में जो भी कोड यूज हो रहे हैं उस बेसिस पर मान लो एक फ्लो थ्रू पाइप्स मैंने एक प्रोग्रामिंग डेवलप किया सी प्लस या पाइथन में मैंने या CFD कोडिंग में मैंने डेवलप किया। तो सब वो कोड अगर उस तरह का कोड अगर किसी ने भी डेवलप अभी तक नहीं किया है तो यू हैव टू डू द कॉपीराइट ऑफ दिस कोड आल्सो। ओके।
So in intellectual property right, we have to do the patent of your product. You have to do the trade secret of the product, copyright also, trademark and design also. Design I have already told कि design आप कोई design develop किए तो design patent भी आप कर सकते हो. Geographical indication means कि geographical indication, what do you mean by geographical indication? Like suppose आपका एक जैसे आप समझ सकते हो कि शिमला का टी जो है that is depend upon that tea is the geographical indicator. That why you identified this thing शिमला टी. शिमला का जो चाय हो ट्रेडमार्क या ज्योग्राफिकल इवेंट के थ्रू हम लोग वो पेटेंट किए हुए हैं. ठीक है. जैसे आप रसगुल्ला, रसगुल्ला कहाँ का है? आप पेटेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेटर कहाँ है? कोलकाता का. सब लोग मानते हैं कि बंगाल का जो कोई आप कोई बनारसी साड़ी एक लेते हैं तो वो बनारस में ही डेवलप हुआ. तो दैट इज डिपेंड अपॉन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. So we have to go with the that is come under the geographical indications. Okay. And trademark you have to patent of that trademark, like you want to do the design some novel logo of your company, or some company is running and they develop the some logo. So that logo is not using by other person. So you have to take for this precaution. You have to give this trademark of that logo also. Okay. So what is the importance of IPR? So intellectual property can be used to establish the goodwill and brand value in the market. So intellectual property एक गुडविल डेवलप करता है और ब्रांड वैल्यू डेवलप करता है. जैसे आप जो भी प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आपको आईसी इंजन में एक पिस्टन का ही मान लो डिजाइन किया मैंने, न्यू तरीके का पिस्टन डिजाइन किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिजाइन आपका कोई चोरी नहीं कर सके. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू file a patent of that particular piston. Okay. So if your design is anyone you see this thing, anyone use your design, so you have to claim that particular person why you are using my or you can file the case also कि आपका डिजाइन को उसने चोरी किया. So this is the power of IPR. So next one is the inventor, creator or author of an intellectual property can be mentioned about the intellectual property in his or her resumes and thus show their competence. Okay. So we have to mention that patent file, all those things, copyright and trademark. You have to mention in the resume also. Intellectual property right certificate establish legal and valid ownership about the intellectual property. It encourage new industry and research, facility technology transfer. सपोज करो आप अपना टेक्नोलॉजी एक डेवलप किए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से पहले आप उस टेक्नोलॉजी को पहले पेटेंट करोगे या कॉपीराइट करोगे, देन आफ्टर यू ट्रांसफर टू अदर पर्सन. So your technology will be safe zone. Trademark. A trademark is any design that can distinguish the goods of one trade from those of another. It includes symbol, word, logo, picture, color or combination of these. I already told in trademark you have to put like a symbol, words, logo also you have to go with the trademark with logo, picture, color and combination of these. In
Critical arena trade name for certain drug may be registered as a trademark. Okay. In medical science also, the trademark is used by some drug agency. They are used. It is covered under the act called Trademark Act 1999. It replaced Trade and Merchandise Act 1958. It extends the whole India. Then different symbol of trademark like a registered trademark intend to use application file for product, intend to use application file for the service. So what is the duration of that trademark is like a 10 year. Then after 10 year you have to renewal your that trademark also. The service mark is the type of also a trademark. What is the duration of that service mark? 17 year. Then after you have to renew that your trademark or service mark. Then copyright, the term originated in the copyright law means that the work originated with the author. It is right with grant protection to unique expression of the idea. सो मैंने अभी बोला कि जैसे कोई कोड डेवलप कर रहे हो तो या कोई लिटरेचर आप नया लिटरेचर लिख रहे हो यू हैव टू डू द कॉपीराइट फर्स्ट in India has a very strong and comprehensive copyright law based on the India Copyright Act 1957, which was amended in 1982, 1984, 1992, 1999. Then what covered by the copyright? Like आप ये नोट कर सकते हो. आई विल शेयर द स्लाइड ऑल्सो. क्या क्या कॉपीराइट आप कवर कर सकते हो, जैसे लिटरेचर हो गया, फिल्म्स हो गया, ड्रामेटिक हो गया, म्यूजिकल हो गया, आर्टिस्ट हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग, बुक्स, ब्रॉडकास्ट. ये जितने भी सेक्शन है दैट इज कवर अंडर द कॉपीराइट. आप फिल्म वगैरह आप देखते होंगे तो वो फिल्म का जो शुरू में रहता है आपका इमेज रहता है वो देखते होंगे कॉपीराइट वहाँ लिखा रहता है. that picture will be not do by other one. Okay, तो ये copyright. The duration of the copyright, the author life plus 60 year of literally work. मीन्स कि आप जब आप कोई बुक पब्लिश करते हो, आपका मैं ऑथर हूँ उस बुक का, तो उस का कॉपीराइट का कब तक ड्यूरेशन है? आपका जो भी ऑथर है उनका लाइफ प्लस 60 ईयर ऑफ लिटरली वर्क. मीन्स कि आप 60 ईयर बाद भी हम उस कॉपीराइट को हम ले सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं कॉपीराइट का. ओके. 60 ईयर फॉर फिल्म एंड फोटोग्राफ, 25 year for broadcasting. So this is the duration of the copyright. If the some copyright under the film, so we have to duration is like 60 year, and for broadcasting is like a 25 year. So symbol of copyright is like that. Then the patent. Patent is an exclusive right granted to an applicant by the government for the limited period to practice the invention, manufacture, use and sell in lieu of the information discovered of the government with regard an invention. The patent confers right to the patentee to exploit the patent for commercial gain and also to stop other from manufacturing and selling the patented product and process. Already I have discussed. I will show the some slide also in next presentation. And in invention in general means a new discovery relating to the product or process even to an existing model or idea. What you have to give the patent, आप किस
प्रोडक्ट को कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को कर सकते हैं। द एपरेटस और द प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, एक एपरेटस को भी आप पेटेंट कर सकते हैं। द प्रोसेस को आप पेटेंट कर सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द मैटर को आप पेटेंट कर सकते हैं। व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल, किस चीज को हम पेटेंट नहीं कर सकते हैं, ये कुछ है। ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड पॉलिएस्टर, any method of treatment of human beings or animals, plant and animal in a whole or any part thereof other than microorganism, a mathematical or business method or a computer program. You have to do not कंप्यूटर प्रोग्राम को आप पेटेंट नहीं कर सकते हो. You have to do the program, computer program in a copyright. You have to do the copyright, not a patent. लिटरली ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्ट वर्क, ये किस में जाएगा? कॉपीराइट. ये कर सकते हैं जो भी म्यूजिकल है, आर्टिस्ट है, ड्रामेटिक है, ये कॉपीराइट. हेलो सर, आपका स्क्रीन रुका हुआ है, स्क्रीन सर स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है, आई थिंक. इट्स गोइंग ना? स्क्रीन इज स्टक सर, आई थिंक. स्क्रीन इज नॉट. वो यस सर, वेट अ मिनट, इट इज ओके. वेट अ मिनट. विजिबल ना? यस सर, यस सर, विजिबल. Okay. So, where you not seen this? You seen this slide? Hello. यस सर, यस सर. Okay. आप कहाँ तक स्लाइड देख पाए थे? सर स्लाइड 3 तक हम देख रहे थे, बाद में उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा. ओके, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा. तो देखो, ये कुछ चीजें पेटेंट नहीं कर सकते. कौन कौन सी चीजें नहीं पेटेंट कर सकते आप? एनी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स इन ए होल और एनी पार्ट देयर ऑफ अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ए मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड को आप पेटेंट नहीं कर सकते. और कंप्यूटर प्रोग्राम को, ये सब पार्ट किस में जाएगा? कॉपीराइट. यू हैव टू डू द कॉपीराइट. लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्ट वर्क, ये सब भी पेटेंट आप नहीं कर सकते. ए स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम, ए प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, टोपोग्राफी और इंटीग्रेटेड सर्किट, एन इन्वेंशन रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल नॉलेज, एन इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी. सो ये जितने भी आप हैं, इसको पेटेंट के कैटेगरी में नहीं रख सकते. you go with the copyright or other trademark. Mostly in this slide is you have to do with copyright. Then the patent, ये पेटेंट कुछ ऑफिसेज हैं जहां पर हम लोग पेटेंट को फाइल कर सकते हैं. जैसे एक पेटेंट का ब्रांच है चेन्नई में. चेन्नई में मेन ऑफिस है. आप, ये कौन कौन से स्टेट को कवर करेगा? ये ट्रेडिशनल जुडिशरी के अंदर कौन कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी एंड लक्षद्वीप. मुंबई के सेक्शन में जो पेटेंट ऑफिस है, जो मुंबई का, वो कौन कौन से स्टेट को कवर करेगा? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव. ओके. तो न्यू दिल्ली का पेटेंट ऑफिस आपको कवर करेगा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. दैट इज जुडिशरी वेयर यू हैव टू डू द पेटेंट. पेटेंट ऑफिस ऑफ कोलकाता, द रेस्ट ऑफ इंडिया. सो a patent is only valid in the jurisdiction in which it is granted in the form of WIPO 1967
PCT 2003 WTO 1995. So you have to give the patent in this format. And one more thing I want to tell you, if you have to do the patent, one is Indian patent. In India, these are the offices of Indian patent for the Indian patent. And if you want to do the patent in abroad, so you have to go the US. यूएसए में आप पेटेंट कर सकते हो, आप ओवरसीज के थ्रू वर्ल्ड वाइड पेटेंट करना चाहते हो तो आप यूएस में पेटेंट कर सकते हो। अगर इंडियन पेटेंट आप कर रहे हो तो इसलिए दो कैटेगरी का पेटेंट होता है, एक फॉरेन पेटेंट है, इंडियन पेटेंट। इंडियन पेटेंट का ये ऑफिस है, 4 ऑफिस आपको मैंने दिखाया स्लाइड में, और ओवरसीज का पेटेंट आप कर सकते हैं यूएस में। सो you have to file your patent in a physical mode also or electronic mode also, like fill the online form, all the detail whatever what they want by the site information. You have to fill all the detail for filing the patent. So after patent, give the patent application, then after publication, pre-grant opposition, examination. Then examination you have to give like a certain, they have asked some question from the patent office, so you have to answer this thing. Application grant, publication of grant, and post grant opposition. Then the importance of why you need the patent. So it encourages research, induce an inventor to disclose his invention. Hello student, हेलो, आप ये रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ते हो क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. anyone student, do you have idea about the research paper or research और इनोवेशन? आईआईसी में तो आप लोग कर रहे हो ना काम, आईआईसी में क्या करते हो? इनोवेटिव आइडिया जनरेट करते हो ना आप लोग, जो भी वो आइडिया किसी भी फील्ड का हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है एक, और सोशल भी हो सकता है। हेलो, तो आप उसमें जो भी आप आइडिया को या रिसर्च आप करते हो वो बहुत जरूरी है पेटेंट और कॉपीराइट। जब आप रिसर्च करने, अभी आप बीटेक के स्टूडेंट हो, अभी आप फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट आप करोगे, इसको मैं पहले स्लाइड खत्म करता हूँ वन बाय वन, देन आफ्टर डिस्कस लेटर by the questioning. Induce an inventor to disclosure his invention, encourage establishment of new industry, reasonable assurance for the commercialization, facilitate technology transfer, stimulate R&D at university and research center, act as a catalyst for a new technology and new businesses. So that is the importance in the form of technology transfer, in research organization, in R&D section, in commercialization, in industry basis. You have, this is the importance of the patent. So industrial design, you have to patent of your design also. So industrial design, that is design patent is act under the 2000. The term for the industrial design is for 15 years. The design patent is only valid for the 15 years. You aware this thing. But if you develop the new product, so we have to give the patent, file the patent for the whole life, okay? But for design, if you want to give some design, new design of any component, so that if you have to file the patent, that is valid only for the 15 years.
It protects the ornament appearance of object exactly as shown in the drawing supplied with the patent application. Protect ornament or non-functional features. So these are the patent, trademark, and copyright, industrial design, and geographical indication. So I have already discussed this patent, trademark, copyright, industrial design, and geographical. In patent, new, what is the subject matter is new, non-obvious industrial application, like a main field is in the field of commercial, chemical, drug, plastic, engines, turbines, scientific equipment. ट्रेडमार्क इज ए साइन और सिंबल सब्जेक्ट ऑफ मैटर क्या होगा साइन एंड सिंबल टाइप का इन ऑल इंडस्ट्री में अप्लीकेबल होगा कॉपीराइट ओरिजिनल और वर्क ऑफ द ऑथरशिप फॉर द प्रिंटिंग entertainment, audio, video, motion and picture, software broadcasting, then industrial design, like a industrial design, like a ornament design. You want to give the some design related to ornament. So this is industrial design, like you have to develop the some clothing design, new clothing design, Sir, automobile, sir, excuse me. electronic design. Sir, So we have to excuse give me, the sir. design. Sir, excuse me, sir. Sir, what did you tell about designing of the ornament? Can you please repeat, sir? Ornament like a in silver, gold, in several design is there. Yeah, yeah. Okay. In nowadays you see these thing कि 1 to 2 3 days 1 week 1 month the new design will be developed by Yes, some yes, of course. Okay. so we have to for this thing your design will not checked by other person first of all you have to give the design patent of that particular design whatever you have to develop this particular design first of all you have to design patent and design patent will be valid only for the 15 years तो 15 ईयर के Okay. ड्यूरेशन के दौरान आपको वो डिजाइन को कोई चोरी कर रहा है तो आप यू हैव टू गिव कोर्ट फाइल भी कर सकते हैं आप Okay. Okay. It's for 15 years now for ornaments. for the industrial design any design Okay. related to that is covered by 15 years okay and Okay, sir. Thank geographical you. indication means ki that goods or services which is depend upon the particular area like a similarity या सिमिलरिटी और अदर लाइक रसगुल्ला मैंने अभी डिस्कस किया साड़ी का जो पेटेंट है ये दैट इज डिपेंड अपॉन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ओके दैट इज विच इज फाइंड इन द सम ज्योग्राफिकल रीजन so that is category under the geographical indication okay fine so I stop this file sharing and thank you I will discuss some more thing like how to write a patent okay just share wait a minute little this is visual all of you hello Yes, this is it's visual visible, sir. Yeah, yes, it's visible. just like if you want to do the some patent of regarding some
any product like this is a US patent. Okay, how to write this thing? If you know how to write the research paper or some literature, then after you better you understand. Okay, so आपने कभी रिसर्च पेपर राइटिंग किया है आप लोगों ने, या फाइनल ईयर में जो आप स्टूडेंट हो, आप ये थीसिस राइटिंग करते हो ना? हेलो हेलो हेलो, एनीवन स्टूडेंट? Students respond. Students answer. What, Students, sir? please respond to the question. आप फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट हो ना? We don't know, sir. So we don't know. So how to write a paper, research paper? Okay. So first of all, if you want to design one something like a piston, okay. पिस्टन का आप डिजाइन देख रहे हो ना? Yeah. पिस्टन का डिजाइन देख रहे हो, तो पिस्टन का डिजाइन तो उसको पेटेंट जब फाइलिंग करते हो तो हाउ टू राइट दिस इन द टेक्स्ट all the detail of the piston, then after you have to filing in the patent office. Okay, so how to write this patent about this thing? You have to write some abstract. Then the design procedure, what is the design parameter? Okay, this is the something like a one notch cone which is used in a high speed vehicle. Okay, so this is the notch cone patent. Okay, so this is all the design. We have, first of all we write the abstract of this your proposal. Then the put the design or introduction. Then after you have to give the detailed design of this any product. Then background of the invention, what is the background. Then the brief description of the drawing. Okay, this section like you have to writing this thing, how to write the patent and filing. First of all you have to draft this thing. Okay, this thing first you have to draft this thing like a abstract summary of the invention, design procedure of the invention, brief description of the design, drawing, a specific description. Then we have to draft this thing. Then you have to file the patent, whatever you do in Indian patent or go with Indian patent or US patent. Okay, so we have to write prepare the draft in this format. Are you getting my point, student? Hello. Yes, sir. Anyone want to ask any question? So I will answer you. Hello. Anyone want to ask any question? Then you ask. और ये IPR का और भी बहुत डिटेल है, शॉर्ट पीरियड में मैंने डिस्कस किया कि आपके लिए बेनिफिशियल है. एनीवन आस्क एनीथिंग, सो आई गाइड यू. हेलो.